और देखा जाए तो दिस इज आई सेड दैट इंडियन ओशन एंड ऑल, it is attached, this is in a part here, it is attached with the Indian Ocean through the Malacca Strait. Which strait I said that? Between, और ये इंडियन ओशन के साथ किससे अटैच हो रहा है? थ्रू द मलक्का स्ट्रेट, जो कि आप कहाँ देखते हैं? सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड एंड आई सेड दैट थाईलैंड, सॉरी मलेशिया, मलक्का स्ट्रेट. Understood? So how it is associated with the different oceans? So एक आपने you have gotten a nearby, what is a roundabout idea. Next one, it is an Indian Ocean. और इसमें एक पूरा whole land mass in the Pacific Ocean can come. Whole land mass 29% and its area is 35%. So the whole land mass, even then some place will be left. The whole earth land mass, continents can submerge within this. But even then some areas, so this is the largest Pacific Ocean, 35%, and then 18% who is 18%? Atlantic. Hello? Atlantic Ocean is 18%. So it is in a double of Atlantic Ocean, Pacific Ocean. Indian Ocean, it is I said that third largest in the area wise, and you can say around 14%. And then north it is surrounded by Indian subcontinent, Asia, west by Africa, east by Southeast Asia and Australia, and south में 60 degrees south latitude. According to the Indian Ocean, Indian International Organization of Marine Department has said that 60 degrees south latitude, it is up to this Indian Ocean. After that, there is I said that, you know that there is which sea is there? Southern Ocean. Which one I said that? Southern Ocean. और यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि अंटार्कटिका थोड़ा सा यहाँ पर it is little more this side. So 60 degrees south latitude तक ही, remember this one, till 60 degrees south latitude there is an Indian Ocean. After that, Southern Ocean. Understood? So समझ में आ गया? Next point I said that Southern Ocean के बारे में if I talk about, it is the largest reservoir of carbon dioxide. In the whole ocean, the largest reservoir of carbon dioxide, who is? तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ ध्यान देना है? ग्लोबल वार्मिंग पे. And our several surveys are going on to understand the behavior of phytoplankton in the different parts of the ocean. How do the phytoplanktons are behaving? If they will suddenly decrease somewhere, then the carbon dioxide concentration एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाएगा. एंड वर्ल्ड के जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किए जाते हैं उसमें से 40%, 35% इट इज एब्जॉर्ब बाय द व्हाट? ओनली सदर्न इंडियन ओशन. द लार्ज नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स आर देयर. समझ में आ गया है कंप्लीटली? सो आप लोग अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं. यस. सो दिस इज योर ओशन बॉटम टोपोग्राफी. अंडरस्टूड? So we have completed with this ocean bottom topography. Next one that we are going to see, the tide. Complete हो गया? इतने डीप में कोई बताता नहीं है. पढ़े हो क्या इतना डीप? इतने डीप